Good evening, respected Kamini Dhiman ma'am, Professor Pavan Kumar sir, and senior faculty members, my dear colleagues and my dear students. Myself, Archana S, Associate Professor from Department of Prasuti of Chandigarh. Today I am excited to talk about you infertility through Ayurveda, some assessment and case studies, successful case studies. Before we get started, I would like to take a moment to thank the organizers, especially Dr. Kamini Dhiman ma'am, the coordinator, for giving me the opportunity to speak today. I truly appreciate all the hard work that has gone into organizing this event. I am grateful to be here with all of you. Before I begin, I would like to take a moment to express my gratitude to my esteemed gurus, mentors, whose wisdom, guidance, unwavering support have been invaluable in shaping my knowledge and skills. With their blessings, I am now here before you to share what I have learned. Om Guru Pyo Namah. Coming to my presentation, infertility affects 15% of couples globally. This equates to over 48 million couples struggling to conceive. Developed countries face rising infertility rates. This is a growing health concern for many. The focus is on identifying the root causes. We aim for holistic and comprehensive solutions where Ayurveda can offer better. Coming to the introduction and definition, infertility is defined as the inability to conceive after 1 year of regular unprotected intercourse. It affects 8 to 12% of couples worldwide. This presentation outlines the key factors, assessments, and comprehensive approach to evaluating the female infertility and management of infertility through Ayurveda with some case studies. Coming to the types, mainly two types are there. Primary, those patients who have never conceived. In Ayurveda, it is known as apraja or anapatya. Secondary, previous pregnancy but failure to conceive subsequently. Comes under sapraja or kakavandya in Ayurveda. According to Charaka and Bhavaprakasha, Vandya is known as Nirartava. And Suchruda, one among the Vimshadi Yoni Vyavat, Vandya is considered Harita. Harita, Vandita as a failure to achieve a child rather than pregnancy. Garbhasravi Vandya and Mrdabalsya comes under Harita Samhita. According to Kashyapa, various Yadaharinis can lead to infertility. Coming to the overall view of causes of infertility, male factor also account equally for the infertility. Here we only discuss about the female factor, diminished ovarian reserve 14.2%, unexplained 10.7%, repeated miscarriage 10.7%. Endometriosis is also a leading cause of infertility nowadays. PCOS, and when to investigate. If based on the age of the female, 18 to 25 years, after 2 years of regular unprotected coitus, we have to start investigation. If the patient female age is between 25 to 35, there is no fertility even after 1 year of continuous sexual intercourse, unprotected intercourse, then we have to start the investigations. More than 35, only 6 months we have to wait. Then we have to start the investigations. Coming to the etiological factors. What are the assessment of infertile woman? To discover any etiological factors, to rectify the abnormality in an attempt to improve fertility, to give assurance and counseling to the couple if no abnormality is detected. What is the importance of early investigation? Timely diagnosis is important. For identifying the underlying issues early can lead to quicker and more effective treatment options. Improved success rates. Early intervention often results in higher success rates for fertility treatments, reducing the risk of complications. Minimizing emotional stress. Addressing infertility early can help manage emotional and psychological stress for the couples.
providing clarity and direction. Prevention of further complications. Early evaluation helps detect potential health problems such as hormonal imbalances or blocked fallopian tubes that would worsen over time. Personalized treatment plans. An early assessment allows for a tailored treatment plan, maximizing the chances of conception and overall reproductive health. Age-related factors. For women, age plays a critical role in fertility. So early evaluation helps assess egg quality and overall reproductive potential. The guidelines for assessment of infertile couple. First of all, evaluation. The clinician must acknowledge the frustrations and fear in them to have a child. Detailed gender and reproductive history should be taken in presence of both. Clinical examination of each partner should be carried out separately. Simplest and least invasive, most productive tests are completed first. At the initial consultation, semen analysis and test of ovulation are arranged. As per Ayurveda, it is very important we have to assess through Trivita, Chaturvita and Dashavita Pariksha for proper treatment protocol to be used. The evaluation of infertile women include history taking, examination, investigations. Ayurveda Trivita Pariksha, Darshana, Sparshana and Prashna is an important in this aspect. Coming to the general history. Nowadays, late marriage is common. So, age, low ovarian reserve. These are the main problem coming for those patients who are coming to infertile clinics. Body weight, low body weight may cause reduced estrogen. So it may also lead to ovarian factor infertility. Obesity, decreased SHBG, increased estradiol and androgen also affect the ovulation. Excessive weight loss or gain may be also due to a thyroid dysfunction. So this also should be addressed. Strenuous exercise, reduced gonadotropins, increased prolactin, menstrual irregularity, and leads to anovulation. General examination, we can see patient having acne, excessive hair growth, oily skin, maybe symptoms of PCOD. So we have to analyze the patient through proper investigation. Coming to the menstrual history. Menstrual history is an important part of infertility evaluation. Coming to the first part, age of menarche. Menarche, there is any history of delayed menarche or any induced cycle starting from the menarche. So we have to inquire detail about the age of menarche. Cycle interval. For proper assessment of fertile period, cycle interval must be properly assessed. The duration of bleeding, the frequency, primary and secondary to adrenal or thyroid dysfunction to assess the ovarian function. Any history of PMS or dysmenorrhea, and we should ask for date of LMB, last menstrual period. Regular cycle, premenstrual cramps, clear discharge, and at the mid-cycle mostly indicate ovulatory cycles. Coming to the marital history and sexual history. Age at the marriage and duration of marriage is important, or marriage has been consummated. It is very much important if the couple coming with the case of infertility, then there is no sexual intercourse and they want to conceive. So it must be excluded first. Knowledge of the fertile period. Sometimes patients unaware of the fertile period. We have to educate them about the fertile period. How long they trying to conceive with unprotected intercourse. More lengthy attempts, more than 2 years. So maybe there may be a tubal factor or male factor may be there. So we have to exclude them also. History of previous marriage with proven fertility. If there is a history of previous marriage, then length of the time to conceive, its outcome. If the patient coming with secondary infertility, we also ask before the first pregnancy, कब conceive हुआ था, कुछ treatment लिया है, वो सब पूछना होता है. Then frequency of intercourse. Use of lubricants or douches. Vaginismus, any pain during sexual intercourse, male factor, ejaculatory erectile dysfunction, history of contraceptives, IUDs, hormonal contraceptives, also delays ovulation, history of 3 months hormonal contraceptives use किया था, अभी 6 months से try करें, that may be the ovulation defect. History of OC pills may mask irregular cycles and PCOS. So
There may be anovulatory cycles. Sexual history continued. Loss of libido, painful intercourse, asking history of multiple sexual partners must be asked. Coming to previous obstetric history, number of pregnancy and time taken to conceive, pregnancy related any complications, any abortions, ectopic pregnancy, premature rupture of membranes, puerperal sepsis, which may cause ascending infection and tubal damage. So most of the secondary infertility must be assessed for tubal factor 2. Gynecological history, history of any STDs, chlamydia, gonorrhea, syphilis, pelvic infections, recurrent vaginal infections, ovarian cysts, genital herpes, warts, etc. should be inquired. Abnormal pap smear, procedures done to cervix such as colposcope, cryosurgery, cauterization also may contribute to cervical factor infertility by cervical mucus defect or stenosis. Coming to the medical history, to assess the general health status, sattva of the patient, so we must plan accordingly. Treatment accordingly, and we must encourage them or counseling proper करना पड़ता है सत्व के according. Change in the hair growth, breast growth, visual disturbance, headache. There may be a hidden cause, pituitary factor. History of any chronic debilitating disease like diabetes, tuberculosis, which cause general debility. Dirgharoginam balasamshya, dhadukshaya, which also a cause for infertility. Previous medications, especially cytotoxic steroids, antidepressants. Nowadays, most patients are using antidepressants. So it must be inquired, and hypotensive drugs, which these are the common cause for anovulation. Surgical history. History of surgery, especially abdominal and pelvic surgery, can increase the risk of adhesion formation, thus increasing the risk of pelvic or tubal disease. According to Ayurveda, Artava Srudo Bhanga leads to Bandhya, infertility. So during the young age, there may be a surgery for appendicitis. It is also cause for tubal factor. Previous history of curettage, Asherman syndrome leads to Asherman syndrome. Endometrium factor will be affected. Ruptured appendix and TB, tubal damage. Previous infertility treatment. To corroborate the history, to add up, to formulate an assessment and treatment plan and prognosis. Previous infertility treatment में क्या result आया था, उसी के हिसाब से हमें new plan हमें formulate कर सकती है. Investigation and treatment of male partner is also important. Personal history is important. Extreme exercise, weight loss, stress, and psychogenic cause can lead to amenorrhea, oligomenorrhea, or oligovulation or anovulation. Stress can be main factor in infertility. Effect of infertility on the couple, including stress, grief, and psychosexual problems and marital disharmony. This must be addressed during the counseling section itself. Family history. Genetically linked endocrinological causes. History of Cushing's syndrome, thyroid disease, breast or ovarian cancer, birth defects in the family, mental retardation in the family, infertility problems, or premature menopause. It must be also be inquired about. Social history, couples' lifestyle and daily habit to assess the risk factors and stresses which cause neuroendocrine changes in ovulation. Lifestyle and daily habit is very much important when we are treating an infertility patient according to Ayurvedic principles. Occupation, regular exposure to heat, tobacco use, prolonged exposure may kill the ovarian follicle. A chemical containing forms in the body from nicotine, gathers in the fluid around the egg, interfering with ovarian function and development of oocytes associated with tubal disease, increase in miscarriage rate, elevated FSH, and premature ovarian failure. Social history, adversely affect alcohol intake, adversely affects. Nowadays, alcohol and smoking are common among females too. Exercise, high incidence of menstrual irregularities and anovulation. Male partner evaluation is also a must. Testicular trauma and torsion testis, history of any infections, mumps in young age, TB or filariasis or epididymitis history, previous STDs, any fever in the last 2 months, erectile or ejaculatory dysfunction of male,
Smoking, alcohol and drug consumption, antipsychotic drugs may lead to erectile dysfunction. Diabetes and neurological disease may also lead to erectile and ejaculatory dysfunction. Renal and liver failure, occupation-related high temperature also suppress the spermatogenesis. The first part is completed. Then second part coming to the physical examination. Sparshan. General examination, we have to check height, weight, BMI, and waist hip ratio of the patient, body habits, fat and hair distribution, oily skin, thyroid enlargement and its symptoms, development of secondary sex characters, any breast discharge and abnormalities, etc. should be inquired. Systemic to detect abnormalities like diabetes, hypertension, TB, organic heart disease, chronic renal lesion, endocrinopathies, etc. After general examination, female, we came to pelvic examinations. Approach should be systemic, thorough, calm and relaxed. Told not to have intercourse, douche, tampons for 24 hours before examination. Ask to empty her bladder. Asked to assume a lithotomic position with legs widely separate. Before going to examine the patient, we must counsel the patient about the importance of examination, and proper consent should be taken from the patient to examine. Asked to assume the lithotomic position with the legs widely separated, head slightly raised to relax abdominal muscle. Each aspect of examination must be explained to the patient to reduce her anxiety. Make sure your hands are warm. Equipments must be there, good light, vaginal speculum, gloves, vaginal water-soluble lubricants. A thorough abdominal examination also can be done. Also must be inspection, giving superiorly the suprapubic inguinal regions, inferiorly clitoris, urethral meatus, vaginal introitus, posteriorly anal and sacroiliac. This all areas should be inspected properly to detect any abnormality. From medial to lateral vaginal introitus, labia majora, minora, and upper inner thigh region. All areas observed for hair distribution, any lesions, atrophy, thickening, discharge, discoloration, and swelling. Next part is palpation for any tenderness, swelling, or mass. Bartholin duct cyst can be palpated. Vaginal introitus palpated with thumb and forefinger, especially 5 and 7 o'clock position. Sometimes endometrioma may be located inside the external genitalia and vagina. Tenderness during menstruation may be the primary complaint. Bimanual examination, hymen adequacy, vagina to examine tenderness, lesion, mass, and discharge. Cervix to know the size, shape, mobility. Mobility is important factor. In case of fixed cervix, there may be some adhesions of endometriosis. Consistency of the cervix, any lumps or tenderness in case of PID. Uterus, palpable or not, non-palpable in a thin woman, absent or retroverted. Hypoplastic uterus are also common. Palpate for size, shape, consistency, mobility, tenderness, and mass. Immobile, scar tissue from old PID and endometriosis cause immobile uterus. Unusual tenderness. Infection, there may be endometriosis too. Ovary may be palpable if it is enlarged or cystic, otherwise no. Endometriosis may be behind the uterus. Tubes, palpable fibrous bands like old salpingitis marked tender tubes, active salpingitis. There may be tenderness also. Rectovaginal examination, especially for retroverted uterus. In case of endometriosis, palpate the uterosacral ligaments for nodules or rectovaginal septum. Then speculum examination. On speculum examination, vagina, to notice the color, any discharge, rugae, there must be rugae, sufficient estrogen, then there must be presence of rugae is there. Cyst and lesions. Normal pH,
We all know 3.8 to 4.5, bacterial vaginos 4.8 to 5.5, and more than 6 trichomoniasis. Bedmont test can be done. KOH slide detect bacterial BIF test can be done. Vaginal cytology and culture can be done. Per speculum, cervix examine to assess the size, shape, consistency, friability, redness, and lesion. Cervical mucus, quantity, quality, clarity, opacity, and the spin barket test can also be conducted during the ovulation phase. Fern pattern, etc. can be done. Pap smear test with a wooden spatula. We have to collect the sample to rule out any abnormal smear. Special investigation. These are the common general investigations. Based on the above findings, clinician determines which test and treatment plans needed, and the couple should be educated. According to Ayurveda, we must go through Tribhita, Chaturvida, and Dashvita Pariksha. Regarding the necessity of the test, preparations, timings, possible discomforts, time the procedure may take, anticipated recovery time, expected outcome. Guidelines for infertility evaluation. In presence of major male defects, very little scope to proceed for female test. If there is a major male defect, then it is better to clear the male factor first. None or minimal invasive methods first. इन्वेसिव मेथड्स को लास्ट में रखना है. स्टार्टिंग में हमें मिनिमल इन्वेसिव मेथड्स ही यूज करनी है. डिटेक्शन ऑफ वन फैक्टर डज नॉट नेगेट अदर फैक्टर इन्वेस्टिगेशंस. When a major factor such as intersex Mullerian agenesis detected, other tests can be suspended. Pregnancy following laparoscopy and HSG are not uncommon. Correctable abnormality should be rectified first. Coming to the Ayurvedic part, मोस्टली सब लोगों ने पिक्चर देखा होगा, निर्मला जोशी मैम का टेक्स्ट बुक में था. दिस इज द बेसिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी. कॉमन फिजियोलॉजी, all should be aware about the common physiology of menstruation, normal physiology of menstruation. Then we have to plan the treatment according to the dosha dushti, according to the cycle. We all know during the Ritukala, Kapha will be the dominating dosha, and there may be a regeneration or follicular growth during the Ritukala, means after the menstrual phase. So the treatment should be aimed to correct the Kapha dosha or improve the Kapha. Then during the Ritupatita Kala, there is a Pitta predominant phase, there is luteal phase. So we have to improve luteal phase defect. So there must be a Pitta Pradhana Chikitsa. Or during the Rajakala, Vata Pravritti is there. So Vatanulomana must be given. Vata को assess करके हमें normal menstruation को ठीक करना है. Coming to the Ayurvedic concepts of anovulation. Abija, Pushpaharana, Nashtartava, Alpabija, Nashtapushpa. These are the words mostly used in our Ayurvedic test to denote anovulation. As Bija, we considered it as Artava in female. So, Artava dosha, the menstrual disorders are the most common factors leading to anovulation. So, any menstrual disorders must be corrected first. Then, the conception follows after the correction of Artava dosha. Pushpaharana, Jataharani, according to Kashyapa, Pushpaharana is the term used during Jataharani, Pushpakni Jataharani. Those Jataharanis which destroy the Pushpa, matlab menstruation. So there may be a complication of anovulation. Nashtartava conditions, the secondary amenorrhea, secondary infertility. Alpabija, during the Anavasana indication, there is some words, Alpabija, Nashtapushpa, Abija. These are the indications of Anavasana. So in the case of oligovulation, anovulation, and Nashtapushpa, secondary amenorrhea, we can add Anuvasana as a treatment, assessing the proper dosha, dushya, etc. Indirectly,
Dhatu Kshaya also leads to anovulation as Dhatu Kshaya starting from the Rasdhatu itself. We all know Rasdhatu ka Upadhatu. Artava is the Upadhatu of Rasdhatu. So Rasdhatu Kshaya, even thyroid disorders also. There is a disorder in the Rasa Dhatu itself. So first we have to correct the Rasdhatu, then Artava will be formed properly, anovulation will be correct. First of all, I am trying to include the treatment protocol I usually adopted in my practice and followed with some case studies. Mostly same protocol is used in according to the dosha, only the medicines are changed. If female couple coming to the OPDs with a anovulation factor, means history of mostly in our OPDs, patients are coming with a lot of investigations. After going to every possible solution, they came last to us. So most common seen in all our practice, last approach of patients is Ayurveda. So there must be a group of investigations all. So we can conclude what is the factor. Maybe the cost for the अभी anovulatory factor. IUI बहुत बार किया होगा, फिर भी कंसीव नहीं हुआ. IVF के लिए ट्राई करना है. तो chronic anovulation और ज्यादा हार्मोनल ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट्स भी है बॉडी पे. तो ऐसा कंडीशंस में मोस्टली आई विल गो थ्रू शोधन एंड शमन. As per Ayurveda, Yonivyapad Chikitsa includes Shodhana and Shaman. Arthodosha also includes Shodhana and Shaman. Garbha Sanskara or Bija Sanskara or Purva Samyoga Vidhi, all explained Shodhana in case of conception. Before planning pregnancy, we must do Shodhana. In my practice, I usually adopt Virechana and Snehapana, mostly done with medicated Grida. In case of chronic or irregular menstrual cycle, first of all, we have to follow the approach like regularizing the cycle. We can adopt if the patient का status कैसा है, एज ग्रुप देखनी पड़ेगी. लेट एज है तो हमारे पास टाइम नहीं है, और थोड़ा सा बीच का एज है 35 के अराउंड है तो हमारे पास है टाइम है, तो हमें साइकिल रेगुलर कर दो, उसके बाद शोधन प्लान करो, वो भी कर सकती है. नहीं तो दीपन पाचन करके आम का कंडीशन और उनका दोष का असेस करके उसके बाद हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्लान कर सकती है. मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर इन ए हरी. इतना साल तक आप एलोपैथी में ट्रीट किया तो इतने साल वेट किया, बट हमारे पास आते ही उनको रिजल्ट चाहिए. सो देयर मस्ट बी प्रॉपर काउंसलिंग. हमारा इन सब प्रोटोकॉल ऐसा है तो हमारे मिनिमम 3 महीना हमारे पास रुकेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे. मोस्टली आई काउंसिल द पेशेंट लाइक दिस. 3 महीने मिनिमम 3 months are required to affect the new formation of follicle. So we should try minimum 3 cycles are needed to get good result. Before also we can get result, but we must plan a 3 months protocol. After Deepana Pachana or according to assessment of dosha or patient sattva avastha, सब कंसिडर करके स्नेहपाना विल बी डिसाइडेड आफ्टर प्रॉपर दीपन पाचन. मिनिमम 3 to 5 days we can do दीपन पाचन. Obese patient so udvartan can be added as a add-on for rukshana with the trifalachurn, kolakulathadi. Any drugs can be used, or takrapana can be given, or mostly we are giving sneha दीपन पाचन with चित्रकादि vadi, shundi churn. Snehapana, then start with Sukumara Krida. In case of estrogen deficiency is there, dryness is there, or any history of cyst is there, then we can go for Sukumara Krida as an option. Then in case of PCOD, mostly Kapha Pitta, in my experience, Kapha Pitta PCODs are difficult to treat. So if Pitta predominance is there, we can choose Pitta Hara treatment, mostly Pitta Rasa Pradhana drugs. Mostly
I am using in my practice Panchatikta Krita. In Pitta Pradhana PCOS and anovulatory factors, Panchatikta Krita can be used. Datimati Krita can be used in unexplained infertility, Rasadhatu Dushti, anemic persons. We can go for Datimati Krita. Also, Datimati Krita indicated in Pandu Chikitsa. It is Vandya indication also for Vandya too. Thalasarpi is the common drug. We can use in most of the patients having ovulatory problem or endometrial problem. We can use Thalasarpi. Panchagavya mostly using chronic PCOD patients for Srodosh Shuddhi. Panchagavya is a best option for PCOD patients. After I am last slides में मैंने रखा है मैंने जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करते स्नेहपान का भी वो भी एक रखा है, एक पेशेंट का दिया हुआ था. उसके बाद नॉर्मल स्नेह सर्वांग अभ्यंग और बाष्पोदर करने के बाद विरेचन विथ त्रिवृत्त अवलेह. In case of Kava Pitta Pradhan, if the disease is Kava Pitta Pradhan, we can choose Trivrit Avaleha with Trifalaquat or simple water. We can give them. According to the Costa, we will decide the dose of the Virechana drug. Mostly 60 to 80, 100 तक देना पड़ता है. गंधर्वहस्तादि तेल, in Vata predominant conditions, we use Gandharvahastadi tel. It is very important. We have to advise them the dietary and lifestyle modification. During the history itself, we have proper inquiry about their dietary lifestyle, and we must change if any abnormal ahar vihara is there. We have to change the pattern. If once the cycle is regularized, or if there is no problem in cycle regularity, from the second cycle onwards, we can go for ovulation induction with oral medication. Usually I practice from the second day of LMP, Satapushpa Churna 1 teaspoon OD with jaggery water, empty stomach, Pushpadhanva Rasa 1 BD with milk. According to the length of cycle, it can be prescribed up to 12th day or 14th day. Approximately 18 to 20 mm ग्राफियन फॉलिकल का साइज होने तक हमें दे सकते हैं. उसके बाद लक्षणादिवड़ी चित्रकादि पित्ता प्रेडोमिनेंट कंडीशन के लिए लक्षणादिवड़ी चित्रकादिवड़ी शुंडी चूर्ण 2 BD for 3 days for rupture of the follicle. There must be a pitta predominant condition to pitta predominant patanulomana for rupturing of the follicle. So lक्षणादिवड़ी चित्रकादिवड़ी and शुंडी चूर्ण helps in the rupture of the follicle. Then after the rupture, then we can go for Shirabella capsule or Bella Churna with the milk in the luteal phase. This is one protocol, oral. Second one, Satapushpa Churna, common drug in most in my practice. Thalasarpi 1 teaspoon BD with the milk. In case of endometrial thickness, any issues with endometrial thickness, we can add Thalasarpi 1 teaspoon BD with milk from the second day itself. Kumaryasava 20 ml BD. This combination also promote ovulation. During the rupture stage, we can add Lashnaadivadi, etc. Palashadi Niruhavasti, my thesis drug for PCOD, along with Pathati Churna. It's my common practice adding Palasha to every Niruhavasti protocol. Kyunki Palasha is a rasayan and it give also already it is indicated in Yoni dosha. So Palasha Niruhavasti can be given if the patient is not conceived. Naito we can plan 3 mahina protocol. First month Virachan, second month Yogavasti, and third month hum oral treatment mein ja sakte hain. If there is no other factor is there, only anovulation is the main factor. Matravasti and Anvasanavasti Sajradi Tela after Kostashodhana. If patient is poor, there is no scope to add Yogavasti, Virajan, etc. So we can go for Matravasti, 60 ml, 80 ml, Sajradi oil or Bella tel. After mild Kostashodhana with Gandharvastadi tel or Haridaki churn, etc.
Yogavasti selection according to dosha predominance. Yogavasti is a combination of Anuvasan and Niruha. So there may be 3 Niruha and 5 Anuvasan Vasti. So we can select the Niruha Vasti drugs according to the dosha predominance of the condition. We can add Nasya with Kshirabala 101 Avrati also for follicular maturation. Nasya is another practice we can add for follicular maturation. But proper follow must be there. एटलीस्ट एक साइकिल हम फोलिकुलर स्टडी करके देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा इनका फोलिकल कब बन सकता है, तो दूसरे साइकिल से हम उसको ट्राई करने के लिए बोल सकती है फर्टाइल पीरियड असेस करके. इन केस ऑफ recurrent abortion cases, especially पुत्रकनी योनि व्यापत, so पित्तहर चिकित्सा is advised योनि व्यापत. So in recurrent abortion cases, mostly torch may be there or any unknown factor may be there, endometrial factor may be there. So here also we have to assess the dosha. Mostly पंचक शोधन अच्छी तरफ से चाहिए, श्रोता शोधन चाहिए तो वी कैन ऑप्ट फॉर पंचगव्य कृत स्नेहपान. और पित्त प्रधान कंडीशंस और टॉर्च जैसा कंडीशंस में हम पंचतिक्त कृत कैन बी ऑप्टेड, महातिक्त कृत कैन बी टेकन फॉर स्नेहपाना. विरेचना कैन बी अडॉप्टेड. In this case, Trivrit Avaleha is the best option. Pitta Kafara. After the Shodhan, we can continue 2 month, 3 month. Pitta Harak Kashaya, Pitta Rekta Harak Kashaya, like Manjushtadi Kashaya, Tiktan Kashaya, even Guduchadi. We can opt for Pitta Rekta Harak Chikilsa. Or Bilwadi and Dushi Vishari Gudika. These are already, Dushi Vishari is indicated in Dushi Visha. There may be some unknown factors, torch is there ke Dushi Visha, or some food, Bhuda Abaharan is there. Bhuda matlab koi microorganism is there. So Vilwadi and Dushi Vishari Gudika can be add on to this Kashaya. Vilwadi Gudika also Deepan Pachan too. If हमने ट्रीटमेंट दे दिया, पेशेंट कंसीव हो गया, आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, I usually practice Swarna Vasanta Malini Rasa weekly once with ghee, starting from the first week of confirmation of pregnancy till the end, weekly once with ghee. In case of Paripluda Paitigi Yoni Vyapat, like patient come with history of recurrent vaginal infections, hydrosalpinx, PID, etc., then we will go for विरेचना is a must there. Mostly hydrosalpinx conditions में विरेचन के साथ, विरेचन के बाद हम नेक्स्ट योगावस्थी प्लान कर सकते हैं. तो विरेचन then followed by निरूहावस्थी और योगावस्थी. इसमें इंग्रेडिएंट्स जो भी चूज कर सकते हैं. We can use चौथहरा properties drugs like पुरंदपाष्टकवाद और रूक्षा प्रॉपर्टी, जो ड्रग का अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, ऐसा ड्रग्स हम यूज करेंगे तो गोक्षुर वगैरह ऐड कर सकते हैं इसमें. लोकली हम वी कैन डू योनि धावन, योनि वर्ती, कुष्ठविप्लयादि वर्ती. इट विल आल्सो हेल्प इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ द एक्सेसिव लिक्विड. सो कुष्ठविप्लयादि वर्ती आल्सो कैन बी एडेड एज ए योनि वर्ती. आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ 2 months, USG will be repeated to rule out hydrosalpinx. Hydrosalpinx नहीं है, then we can go for Uttaravasti. Mostly hydrosalpinx can be diagnosed through USG. Then Uttaravasti with Apamak, I usually practice Apamaka Kshara Tel and Mahanarayana Tel or Phalakalyana alternately, or first 3 days Apamaka Kshara Tel, which make दिन gap देके last 2 days Mahanarayana और Phalakalyana. ऐसा alternate practice होता है, नहीं तो alternate days पे Apamaka Kshara 3 दिन के बाद एक gap जरूर देती हूँ. It's my practice, टेक्स्ट बुक रेफरेंस नहीं है. Internally, we can give Guduchadikvad, Pitta Kafare, Punanavashtakvad, and Trifalaguglu internally, anti-inflammatory property के लिए. Continuous 3 महीना. धातुक्षयजन्य infertility, mostly infertility due to TB. Snehapana with Shatpala or Indukanta Krita. These are indicated in the Rajyakshma, and these are Shrota Shothana too. So we can, after assessing the Agni, Dhatu, Dosha, we can
improve after Deepanpajan. Snehapana can be with Shatpala or Indukanta Krida can be given. Virachana can be given with Trivurtavaleha. According to the assessment of Bella of the patient, we can plan the next treatment. बस्ती प्लान करके फिर ब्रह्मंड देना है तो ब्रह्मंड दे सकते हैं. ट्यूबल ब्लॉक इज देयर, वी कैन गो फॉर उत्तर बस्ती. और अनवासन बस्ती कैन बी प्लान विथ बेल्ये वातहरा ड्रग्स. निरूह बस्ती देयर में भी यूज ऑफ शोधना ड्रग्स. सो योग बस्ती कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो दोनों काम हो जाते हैं. यूट्राइन हाइपोप्लासिया और थिन एंडोमेट्रियम. इफ देयर इज ट्रीटमेंट हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, मॉडर्न ड्रग्स ज्यादा ले लिया है पेशेंट ने, इंडक्शन बहुत किया है, तो मोस्टली शोधना इज वेरी नेसेसरी इन दिस कंडीशंस. विरेचना, स्नेहपान विद सुकुमारा और फलसर्पी. यूट्राइन हाइपोप्लासिया 3 एंडोमेट्रियम केसेस में सुकुमारा कृदा और फलसर्पी स्नेहपान इज बेनिफिशियल. And Mustadi Rajayapana Basti. Yapana Basti can function as Snehana. दोनों निरूह और स्नेहन बस्ती का दोनों का काम करते हैं. तो मुस्तादी राजयापन बस्ती एलोन कैन बी गिवन फॉर 3 साइकिल. 8 डेज का 3 साइकिल दे सकते हैं. नहीं तो योगावस्थी प्रोटोकॉल में भी इनको मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं. लास्ट स्लाइड में मैंने डाला हुआ है, उसमें इंग्रेडिएंट्स मैं कैसा यूज करती हूँ. नस्य विथ क्षीरबला 101 आवर्ती, बलातैलम 101 आवर्ती for Masha Nasya. In increasing dosage, we can do for thin endometrium or uterine hyperplasia. Also for follicular maturation. Then coming to the cases. A 37-aged female failed to achieve a viable pregnancy since 10 years. Her menstrual history was regular with 28 to 30 days cycle. History of 2 spontaneous abortions in the year 2030 and 21. Treatment history revealed 8 sessions of IUI. And she was suggested for IVF, but she didn't want to go for IVF, so she came for Ayurvedic management. 2023 मई में पेशेंट अप्रोच किया था, यूएसडी फॉलिकुलर स्टडी किया था, फॉलिकल भी बन रहा है. 22 उसी साइकिल में हमने स्नेहपान प्लान किया. दाडिमादी कृदा वाज यूज्ड. उसके बाद नेक्स्ट साइकिल oral medications क्योंकि some complaints of infections are there. Thirty white adherent discharge. So vaginal infection is there. So we go for Unithavan with Triphala and Palash. Triphala Gugulu, Guduchwadi Kwat and Pipaliadi Vati. Triphala Gugulu and Guduchwadi Kada orally and Pipaliadi Vati per vaginally दिया था. उसके बाद उसी साइकिल में ही योगावस्थी प्लान किया. उसमें मात्रावस्थी सजराती तेल से किया था और निरूहवस्थी I will practice according to dosha. इंग्रेडिएंट्स को चेंज करते रहती हूँ. निरूह बस्ती में भी कषाय को चेंज करती हूँ, कल्क को चेंज करती हूँ. शतपुष्पा कॉमन ड्रग है, उसको चेंज नहीं. उसके अलावा जो भी ड्रग्स ऐड करना है अकॉर्डिंग टू दोषा ऑफ द डिसीज कंडीशन एंड द पेशेंट कंडीशन. 2000 in 8th month also 1 or yogavasti done with 1 cycle uttaravasti with phalakalyana krita. After 3 months the patient time came with UPT positive. डिलीवरी भी हमारा हॉस्पिटल में हुआ था. उसका वीडियो भी हमने बनाए थे. पेशेंट बहुत खुश थे क्योंकि इतने साल का 10 इयर्स के बाद का इनफर्टिलिटी था और दूसरे पेशेंट ने बोल के भेजा था. और केस स्टडीज ऑफ अनोबुलेशन. इसमें प्रीवियस बिफोर ट्रीटमेंट उसको 14th डे पे भी उसको कोई भी 13 mm का फॉलिकल भी नहीं था. आफ्टर ट्रीटमेंट इसमें भी मैंने जो भी बोला है इसका प्रीवियस हिस्ट्री क्रोनिक अनोबुलेशन का है. उसमें मैं मोस्टली प्रैक्टिस करती हूँ शोधन के बाद ओबुलेशन इंडक्शन का प्रोटोकॉल. सो उसी में 22nd लेट ओबुलेशन हो रहे हैं पेशेंट को, वी कैन मॉनिटर. एंड इफ पेशेंट इज समटाइम्स से हम फॉलिकुलर स्टडी बोलते हैं तो पेशेंट भी थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, उसी टाइम ट्राई करनी है. तो एक बार हमने असेस किया पेशेंट का फॉलिकल कब बनता है, फर्टाइल पीरियड असेस करके हम दूसरे साइकिल से विदाउट फॉलिकुलर स्टडी वी कैन ट्राई फॉर patient advise the patient for conception. Then this is the obstetric ultrasound of the patient. 1912 was the अभी recently वो pregnant है. 1912 was the LMP. This is the ultrasound of follicular rupture during 22nd day of the cycle. Rupture हुआ था. जो शतपुष्पा वगैरह मैंने जो यूज किया था after शोधना therapy. Then this also a ovulation, anovulatory cycle.
in this patient the cycle was irregular. So 11th मंथ में पीरियड्स आया, फिर 2-3 महीने से पीरियड्स ही नहीं आया था. उस टाइम में हमने पहले उनका साइकिल रेगुलर करने के लिए ओरल थेरेपी चलाया, उसके बाद स्नेहपान फॉलो किया था. स्नेहपान का चार्ट हम मेंटेन करते हैं और डोज बढ़ाने का कैसा है. तो उसके बाद 3 दिन मालिश करके फोर्थ डे मालिश करके फोर्थ डे पे विलेजन करते हैं. उसके बाद का फोलिकुलर स्टडी है. 6th मंथ में फोलिकुलर स्टडी हुआ, बट उस टाइम कंसीव नहीं हुआ. उसके नेक्स्ट साइकिल कंसीव हो गया, उसका डिलीवरी भी हो गया. This is some type of unexplained infertility. Maybe the retroverted uterus may be the cause. Counseling may be help. Married life 4 years था. और during the investigation when polyp was seen, then it was polypectomy was done. उसके बाद एक स्नेहपान किया, विरेचन किया. उसके बाद पेशेंट दूर से आए थे, गुड़गांव से था, तो पेशेंट चले गया. फिर बाद में मैसेज आया यूपीडी पॉजिटिव. दिस इज सम पेशेंट ऑफ, ये भी दूर से थे. ये हमारा स्टूडेंट का सिस्टर थे, तो इनका यूट्रस भी सेप्टेड थे, bilateral fallopian tubes pattern थे. इनका प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ 1 अबॉर्शन और 1 एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हिस्ट्री था, बट ट्यूबल सर्जरी नहीं हुआ था. एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मली अबॉर्शन हो गए थे. उनका भी सिर्फ 1 मंथ का ओवुलेशन इंजेक्शन ऑरली दवाई दिया था. ना शोधना इज देयर. देन शी कंसीव्ड and delivered in July. This is the tubal factor infertility before and after. She came here for only for उत्तरावस्थी. अभी नाउ सबको पता है, यूट्यूब में सब कुछ मिलता है. सो उत्तरावस्थी क्लियर करेंगे ट्यूबल ब्लॉक, ऐसा करके पेशेंट्स आते हैं. और कुछ ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ उत्तरावस्थी प्लान करो. तो 3 महीने का साइकिल चलाया, जो मैंने प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं मोस्टली वो ही करती हूँ. इसमें भी इसका टीबी का हिस्ट्री था. एक बायलैटरल ट्यूब्स ओपन हो गए. एक हाइड्रोसाल्पिंग्स केस था. इसमें जो योगावस्थी का प्रोटोकॉल, मैंने 2 साइकिल योगावस्थी किया, 3 साइकिल उत्तरावस्थी किया. तो इसमें मात्रावस्थी में हम महानारायण तेल यूज किया. निरूहावस्थी में पुनर्नपाष्ट क्वाथ और एरेंटामूल क्वाथ 100 ग्राम यूज करके इसमें हमने 500 ml का क्वाथ बनाते हैं. देन द इंग्रेडिएंट्स आर टेकन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. गोक्षुर वगैरह ऐड करते हैं. इसको हमें वो चाहिए बाय बिडंग ऐसा एंडोमेट्रियोसिस है, और कोई हमें क्रिमिहर प्रॉपर्टी वाला ड्रग भी ऐड करना चाहिए, और गिलोय एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाला. प्रियंगो और बृहदी में बोला है वंध्याना. बृहदी का सिंगल ड्रग का प्रॉपर्टी वंध्या में भी बोला हुआ है. तो बृहदी, प्रियंगु, बचा एंड पिप्पली, these are the most common drugs I will use in Yogavasti. Then Taila, Mahanarayana Tela 150 ml can be used, or we can add some. हमें और कोई प्रॉपर्टी वाला ड्रग चाहिए तो we can add, और कोई घी का प्रॉपर्टी चाहिए तो we can mix them. साइंधवा 12 ग्राम, मधु 75. एक पलाशादी बस्ती जो मैंने पीएचडी में किया था, मोस्टली उसी लाइन ऑफ ड्रग मैं चूज करती हूँ. पलाशादी बस्ती में पुष्पा, बचा, पिपली था कल्प में, तो इसको कभी भी मैं चेंज नहीं करती हूँ, मोस्टली यूज करती हूँ. इन केस ऑफ पिता प्रोडोमिनेंट पेशेंट्स इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी मैं सभी में यूज करती हूँ. और एक तैल का और मधु का कॉम्बिनेशन भी मैंने उसी प्रोटोकॉल फॉलो करती हूँ. मधु तैलिका कैन बी ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस. मधु एंड तैला इन इक्वल क्वांटिटी, मीन्स 75 or 120 we can also use. Approximately 700-800 ml basti can be given. और साथ साथ योगावस्थी के साथ साथ उत्तरावस्थी भी है. कई बार अपामा क्षार तेल महानारायण ऑल्टरनेटली बीच में छोड़ के फिर करते हैं. बीच में संडे आते तो छोड़ना पड़ता है ऐसा. इसमें अभी है पहले वाला बायलैटरल ब्लॉक था और हाइड्रोसाल्पिंग्स भी था. अभी लेटेस्ट है, इसमें एक साइड पूरा ओपन हुई, अभी दूसरे में फिम्ब्रिल में थोड़े से ब्लॉक है. Concluding this session, most important is to perform relevant tests in their proper order at an appropriate time interval, rather than to subject the couple to a large range of investigations, many of which bear little relevance to the day-to-day management of their program. It is the clinician's responsibility to assist the emotionally devastated couples to discuss viable options and to take proper decisions.
According to Ayurveda, we must know the Dashavida Pariksha, importance of Dashavida Pariksha, Dravida Pariksha. Sometimes Yukti can be. Yukti may add to the proper treatment. Yukti, Anuman, ये सब हमें यूज करना पड़ता है. So we have to prepare a proper protocol according to the condition of the patient. But most of these common protocol, there may, in case of chronic infertility, we must do a Shodhana first. In my practice, I usually practice Shodhana. Mostly Viraj and Paman both come practice करते हैं. Thank you. Very nice, Archana. Thank you. It was really very appreciable presentation prepared over here and presented over here. It's really appreciable. So we will now take up the questions. If anyone want to ask the question, we can take up the question. Anyone want to ask the question? Can ask, or otherwise I'll invite the experts. Anybody, if want to ask, can pose the question or can directly ask. I think no one is going to ask now. So I would like to invite Anjana madam. आपको कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे मैडम? मैडम नमस्कार, सभी लोग को नमस्कार। जी मैम, मैम बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था और एकदम इन्होंने जो है मैडम ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था इनका और इनका अनुभव था और रियली मैम मतलब अच्छा लगता है जब इस तरह के प्रेजेंटेशंस आते हैं, प्रैक्टिकल आते हैं जिसमें अप्लाइड एस्पेक्ट्स हमारे पास एकदम क्लियर होते हैं। और जो इनका एक बहुत अच्छा जो मैंने समझा या इनका जो प्रोटोकॉल रहा कि सबसे पहले हमें विरेचन ही कराना है या वमन कराना है अर्थात शोधन कराना है और उससे क्या है बीज की कार्बोकता को बढ़ाना है और उसके साथ में फिर जो है इन्होंने अपने जो ट्रीटमेंट प्लान बताए हैं रियली एकदम मतलब मेरे को तो सच में बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने भी सुना है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और ये वीडियो ऑडियो जो भी है इनका फिर से यूट्यूब पे बहुत देखा भी जाएगा। सबसे अच्छा लगता है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स जो दिखाए हाइड्रोसल्फिंग से लेके और पीसीओएस से लेके और वंध्यात्व इनफर्टिलिटी पे इन्होंने जो अपने वर्क बताए और ये भी बताया कि संडे वगैरह में कभी कभी मिसिंग होती है, ये नेचुरल सी बात होती है क्योंकि हम लोग हमेशा वर्क नहीं कर सकते, बीच में वीकली एक जो होता है रेस्ट डे होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं और एक अच्छा बताया जो पलाश बस्ती पे इनका पीएचडी का वर्क हुआ है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा पीएचडी वर्क पे जो भी इनकी थीसिस रही है उसके बारे में ये थोड़ा सा और अच्छे से अगर इनलाइटेड करेंगी तो अच्छा लगेगा। जी अर्चना। हाँ जी, एक्चुअली मैम मेरा पीसीओडी पे काम हुआ था पीएचडी में, तो उसमें एक ग्रुप में पलाशादि निरूहवस्थी विद पाठादि चूर्ण दिया था। उसमें जो इनफर्टिलिटी सेकंड प्राइमरी इनफर्टिलिटी का 4 पेशेंट था, शायद कंसीव हो गए थे। इवन आफ्टर माय ट्रीटमेंट आल्सो फॉलो वाज देयर, पेशेंट आके मुझे कॉल करके बताते हैं मेरा कंसीव हो गया, ऐसा करके था। एक्चुअली इसलिए मैं पलाश निरूहावस्थी को कभी भी छोड़ा नहीं है। पटाती चूर्ण आल्सो आई एम यूजिंग इन प्रैक्टिस, बट समटाइम्स शॉर्टेजेस देयर, तो वो प्रिपेयर करना होता है, वो भी आर्तव दृष्टि का ही अंडर आता है। मैडम एक बार पलाशादि निरूहवस्थी के सारे कंटेंट बता दीजिए और पाठादि चूर्ण इसमें सिर्फ पलाश का क्वाद होता है, मैंने जो आपको दिखाया स्लाइड में। जी जी इसमें क्वाद हमें कंडीशन के हिसाब से ऐड कर सकती है। इसमें सिर्फ पलाश का क्वाद है, पलाश तोक का क्वाद, देन शतपुष्पा पचा पिपली, 3 ही ड्रग है कल्क में। जी फिर जी तेल में मैंने यूज किया था मूर्छित तिल तेल यूज किया था थीसिस में, जी जी और जी मधु और साइंधव। उसमें थोड़ा सा माधुदैली का वस्ती के पैटर्न नहीं था, और मैंने पंचकर्मा डॉक्टर ठाकुर सर का गाइडेंस पे मैंने उसका डोसेज थोड़ा सा एडजस्ट करके यूज किया था। तो वो ही मैंने अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ। मीन्स 150 ml तेल लिया है तो 75 मधु यूज कर रही हूँ। मालदैली के में दोनों इक्वल क्वांटिटी यूज करते हैं, मधु और थैंक यू। ओके। और पाठादि चूर्ण में मैडम क्या क्या रखते हैं आप? पाठा, त्रिकटु और कुडाचा बीज था। अच्छा। वो ग्रंथिपूत आर्तव दृष्टि का इंडिकेशन में है। बिल्कुल जी 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 थैंक यू मैम, थैंक यू।
Thank you. Excuse me, madam. Yes, With the ma'am. permission of the chairperson, Madam Kamini, madam, I would Sheila like to just Sulasthi. please repeat the this Palashadi Niruhavasti contents and Pathadi Churna contents, madam. Okay. पाठादि चूर्ण ग्रंथिपूत आर्तवदृष्टि अष्टांग हृदय चिकित्सा वो शारीर स्थान ग्रंथिपूत आर्तवदृष्टि का चिकित्सा में बताया है पाठा त्रिकटु एंड कुटच बीच मैंने यूज किया था पाठादि चूर्ण वो पीसीओडी में वो सिंपल भी देते थे वो जामनगर में लक्ष्मी मैम का फेवरेट ड्रग था वो हर साल में वो देते थे एडिशनली और कुछ ड्रग और कुछ थेरेपी ऐड करते थे तो अभी भी बहुत अच्छा रिजल्ट है उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में स्पेशली पीसीओडी में और पलाश निरूहवस्थी चरका सिद्धिस्तान में है और सिर्फ उसमें क्वाद रूप में पलाश त्वक यूज करते हैं और कल्क में बचा पिपली एंड शतपुष्पा देन मधु मैंने मूर्छित तेल थीसिस में यूज किया था जो भी तेल हम यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन देन साइंथव इसमें Thank you, थोड़ा madam. सा एक और डाउट है कि समटाइम्स पलाश त्वक नहीं मिलता है पेशेंट लेके आता है पलाश पुष्प तो कैन वी यूज दैट और नॉट पलाश पुष्प का और त्वक का प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग हो सकता है मैम और बस्ती में फिर पुष्प का क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होगा वेट कम है ना क्योंकि पेशेंट लेके आता है कि त्वक तो नहीं मिला ये पुष्प मिल गए है ना हाँ पुष्प हाँ जब शॉप में जाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास पलाश त्वक तो नहीं है लेकिन पुष्प है सूखे हुए वो दे देते हैं तो क्या मैंने हम उसको मैंने यूज कर प्रैक्टिस में सकते नहीं किया है मैम तो मुझे हैं इतना आइडिया नहीं है सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को कुछ क्योंकि हम लोग भी दे रहे हैं तो समटाइम्स फिर हम वापस कर देते कि नहीं नहीं ये हमें नहीं चाहिए तो क्या ये यूज किया किसी ने कि नहीं मतलब मेरा थोड़ा सा वो था क्योंकि हम भी देते हैं पलाशादी पर उसमें ये समटाइम्स नहीं मिलता है ये पलाशादी वाला मटेरियल तो पुष्प भी लेके आ जाते हैं शॉपकीपर दे देते हैं तो पुष्प वगैरह मैंने सुना है मैम योनि थावन में यूज किया जाता है बस्ती में मैंने ऐसा सुना नहीं है तो की बताया है एक्चुअली नहीं यूज किया ना नहीं नहीं ठीक है Good थावन में evening, सुना ma'am. है हाँ, हम भी रिटर्न कर देते हैं उसको ना गुड इवनिंग मैम डॉक्टर शीला हाँ गुड इवनिंग मैम मैंने भी एक पेशेंट में इधर अभी गुजरात में पलाश पुष्प बहुत ज्यादा मिल जाता है ना तो हाँ हाँ ऐसे मेरा भी थेसिस एक्चुअली पलाश आदि योग बस्ती में ही था हाँ तो हाँ मैंने उसमें एक पीसीओडी की पेशेंट थी उसमें रासनादी निरुआ बस्ती दिया था तो उसमें मैंने पलाश का पुष्प ऐड किया था एक्चुअली तो हाँ हाँ अभी कुछ भी इनफर्टिलिटी पेशेंट हो वो हो तो मैं पलाश पुष्प यूजुअली ऐड करती हूँ मैम जो सीजन रहता है ना अभी सीजन है पुष्प का तो फिर फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं तो वो मैंने यूज किया है मैम हाँ तो हाँ उसमें एक पेशेंट में तो कंसीव हो गया है पर ऐसा बोल तो नहीं सकते उसकी वजह से ही है करके आ, हाँ पर मैं यूज किया है मैम बहुत सारे पेशेंट पर उसका सीजन हो तभी ही यूज किया है फिर नहीं उसके बाद सीजन तो है नहीं देखो सीजन है तब तो हम कल्क बना के यूज उसमें ऐड ऑन कर हम्म सकते हैं ठीक है ना हम्म बट एक ही लॉजिक मतलब उसको ऐड तो हमने कर दिया उसका बेनिफिट क्या रहेगा उसका एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा या कुछ फायदा चेंज होता भी है कि जस्ट ऐड ऑन है ऐसे मतलब क्या है वो भी एक डाउट है ना कि ठीक हाँ है हमने मैम ऐड तो कर दिया लेकिन क्या हमें उसको ऐड करने से कुछ चेंज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो भी एक्चुअली हमें मैम देखना पड़ेगा एक देखना पड़ेगा ना हाँ पायलट हाँ स्टडी जैसा करवा के हाँ 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 क्योंकि वो तो संहिता में तो थोड़ा डिफरेंस तो है ही पुष्प का और त्वक के उसमें हाँ देखो तो संहिता में जो भी लिखा है सबके गुण कर्म लिखे वो सब मेरे हिसाब से ओरल के ही लिखे हैं जितने भी सारे द्रव्य गुण में मिल रहे हैं कि हाँ उसके हम्म गुण रस गुण विरूपक जो भी लिखे हैं कि आप ओरली लेते हो पुष्प तो उसका रस गुण विरूपक ये है त्वक है तो इसका ये है ठीक है ना जी इफेक्ट भी मैम शायद वैसे ही बताया होगा बट जब हम बस्ती की बात कर रहे हैं तो हम बस्ती में ऐसे करके ले रहे हैं तो करना चाहिए मतलब एक में त्वक यूज करके एक में पुष्प यूज करके क्या हम्म। कुछ डिफरेंस मिलता है क्या इसका हमें मतलब वो जो ऐसा भी कुछ रिजल्ट केस रिपोर्ट रखेंगे मैम की जिसमें किया है ना उसका तो फिर हमें थोड़ा
हाँ भाई, आप खुद ही करके देखो भी। पलाशादी नीरू आपने 10 पेशेंट में दिया जिसमें त्वक चूर्ण आपने मिलाया, 10 पेशेंट ऐसा जिसमें आपने पुष्प मिला दिया, त्वक चूर्ण नहीं जी मिलाया, तो क्या उसमें पीसीओडी में डिफरेंस मिला है, या ओव्यूलेशन पे इफेक्ट मिला है, या चेंज मिला है, किस में मिला, वो देख सकते हैं ना, है ना। जी मैम, यस मैम। तो पुष्प तो आपको अभी मार्च महीने में ही मिले होंगे, उसके बाद तो खैर बंद हाँ हो मैम, जाते मैं बहुत अभी तो बहुत ज्यादा हैं। मिला था, अभी हम्म, थोड़ी दिन से तो कम ही है, इतना नहीं है। अभी बंद हो जाएगा ना, अभी हाँ हाँ मैम। मार्च में ही मिलते हैं, तो उसके जी। बाद तो अभी नहीं मिलेंगे कुछ दिन बाद, तो हाँ। मार्च के महीने में आप यूज करके तो देख सकते हैं कि हाँ भाई हमने कल्क डाला पुष्प का, तो हम्म। चेंज या एड ऑन या नहीं मिला, ऐसा कि त्वक से ज्यादा रिजल्ट मिलता है पुष्प से नहीं मिला, ऐसा भी तो देख सकते हैं ना, जी मैम। है ना। यस। यस मैम। हम्म, हम्म। थैंक यू मैम। कोई और कुछ ऐड ऑन करना चाहता है क्या इसमें? एक दो क्वेश्चंस है बट उसको वही है, ट्यूबल ब्लॉक में अगर आपने उत्तर बस्ती भी दिया नहीं खुला तो क्या करेंगे? कोई पेशेंट अपनी भी ज्यादा तरफ टाइम रुकते नहीं है ना मैम हमारे पास भी। हाँ हाँ हाँ। अदर ऑप्शन में है तो फिर हम रेफर आईवीएफ के लिए रेफर ही करना, हमें हमेशा हम काउंसिल करके ही लेना है पेशेंट को। 100% हम किसी को भी श्योरिटी नहीं दे सकते, अटेंशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अटेंशन हम्म। कुछ है तो हमें पता नहीं चलता आगे कितना ब्लॉक है क्या है, तो हम्म मोस्टली काउंसिल करके ही लेती हूँ, 50-50 चांस लेके ही चलती हूँ। हम्म। माइल्ड एंड मीडियम ब्लॉक्स तो खुल जाते हैं, और अपामा के क्षार तेल भी हमारा फार्मेसी में बनाते हैं, अच्छा। बाहर के नहीं है, हम्म। तो क्वालिटी भी डिफर करते हैं। हाँ वो तो है, कोई भी मेडिसिन आप यूज करोगे तो सेल्फ प्रिपेयर्ड है या मार्केट से लिया है, या कंपनी कंपनी का भी रिजल्ट अलग अलग मिलता है ना आपको, किस कंपनी के ऑयल का क्या रिजल्ट है, किसी का क्या है, वो हाँ ये चेंज तो रहता है, क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब मैंने देखा है कि उत्तर बस्ती अगर आप देते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। यस मैम। एक तो पेशेंट का कोस्ट बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, कि उसको कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है और आप उत्तर बस्ती देते हो तो आपको डिजायर्ड इफेक्ट नहीं मिलता है ना, तो इसलिए एक निरूह दे के ही उत्तर बस्ती दे तो मेरे ख्याल ज्यादा रिजल्ट मिलता है उन यस पेशेंट्स में। मैम। ठीक है। यस। और दूसरा कि सराउंडिंग्स जो रहता है कि आपने जब दिया था पेशेंट का साइकोलॉजिकल सेटअप क्या था, आपका देने वाले का भी क्या था, वहाँ वातावरण जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे मंत्र यस। चला के फिर देते हैं तो यस। इफेक्ट अच्छा मिलता है। हाँ। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर तो स्किल है, मतलब हर एक व्यक्ति जैसे देता है तो हर एक की अपनी अपनी स्किल भी है उत्तर बस्ती देने की, कि कोई देता है तो एकदम से इफेक्ट आता है, कोई देता है तो नहीं भी आता है, तो वो अपना अपना स्किल भी है कि हाँ, वो मैंने देखा है बहुत डिफरेंस की, कुछ कुछ स्कॉलर से अगर हम कराते हैं और कुछ केस से कराते हैं तो स्किल में फर्क मैंने देखा है, ये सब मिलता है कि हाँ किसने अच्छे से किया किसने अच्छे से नहीं किया, मतलब प्रॉपर आपका मेडिसिन अंदर गया, कैन्यूला प्रॉपर इंट्रोड्यूस हुआ, कितना उसने उससे किया, उसमें बहुत फर्क पड़ता है मेरे हिसाब से, है ना। इसमें क्वेश्चन है कि ट्यूबर ब्लॉकेज वाज sorted with Uttar Basti, they do get open but further pregnancy still did not happen। हाँ, मतलब उत्तर बस्ती से ट्यूब तो खुल गया लेकिन अभी कंसीव नहीं हुई पेशेंट, तो क्या करना चाहिए ये? मोस्टली वी कैन प्रॉपर शोधना प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो कंसीव हो जाएगा। सिंपली उत्तरावस्थी करने से ट्यूब तो ओपन हो जाएगा, बट कंजम्पशन का अलग फैक्टर भी हमें लेना पड़ता है। तो मोस्टली मैं प्रोटोकॉल में, कोई कोई पेशेंट जो सिर्फ उत्तरावस्थी के लिए आते हैं उनको काउंसिल करना मुश्किल हो जाता है। बाकी मोस्टली पेशेंट्स में शोधना फर्स्ट विरेचन और योगावस्थी के साथ ही करती हूँ, तो मोस्टली उसके बाद पेशेंट कंसीव हो जाते हैं। अभी रिसेंट पेशेंट्स है इसमें कंसेप्शन अभी तक हुआ नहीं है, जो पुराना पेशेंट्स है उसमें कंसेप्शन का हिस्ट्री भी है। आफ्टर विरेचना लिया हमने पेशेंट को, नहीं तो हमने उत्तरावस्थी ओपन हो गया उसके बाद एक विरेचन दे सकते हैं पेशेंट को। हाँ मतलब इसमें सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे ना, कि आपको हर एक फैक्टर पे
रिपोर्ट्स देखनी है कि हस्बैंड की रिपोर्ट सही है, उसकी ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन तो नहीं है पेशेंट का, पीआईडी तो नहीं है पेशेंट को, ना। ट्रिपल ब्लॉक तो आपके चलो खुल गया, लेकिन बाकी फैक्टर्स के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ता है। और मेन जो आजकल मिलता है, सो मेनी टाइम्स मेल फैक्टर भी मिलता है, और रिपोर्ट चलो ठीक है, सिमिलरिटीज ठीक है, समटाइम्स ईडी का फैक्टर मिलता है, वो भी है। हमारे पेशेंट्स में यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनमें ईडी मिलता है, तो वो दिक्कत भी होती है, फिर वहां पर हमें उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, मेडिसिन देनी पड़ती है, सारी बात करनी पड़ती है, ऐसा भी है ना। तो सारे फैक्टर्स देख के ही हम ट्रीटमेंट करेंगे तो होगा। एचएसजी से हमने पता कर लिया ठीक है इसका ट्यूबर ब्लॉक है तो हम उत्तरबस्ती दे रहे हैं, बट अदर देन दैट बाकी फैक्टर्स भी आपको कंसिडरेशन में मेरे हिसाब से लेना चाहिए। हर एक फैक्टर मतलब ये लेना चाहिए तो ही रिजल्ट मिलता है। और दूसरा कि ये भी बोला है ना कि सारी रिपोर्ट्स ठीक होने के बावजूद भी 1 साल का टाइम तो हमें देना ही पड़ता है ना। और दूसरा प्रजास्थापन गण भी हम ऐड ऑन कर देते हैं जैसे साथ साथ में, तो भी इफेक्ट आपको मिल जाएगा। और दूसरा कि समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग पूरा साइकिल एक ही जैसी दवाएं चलाते हैं, वो एक ही जैसी दवाएं नहीं चला के फर्स्ट हाफ में अलग चलाइए, सेकेंड हाफ में अलग चलाइए, या तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी तुमने एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू दैट दोषों को देखते हुए मेडिसिन थोड़ा थोड़ा हम चेंज करेंगे तो भी रिजल्ट मिलता है ना। पेशेंट का मेंस्ट्रुअल पैटर्न, मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी आपको इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है कि हमें किस दोष के ऊपर काम करना चाहिए, है ना। हम्म। ये क्वेश्चन है कि व्हाट कैन बी द ओरल ट्रीटमेंट इन केस ऑफ हाइड्रोसल्फिंग्स। एक्चुअली मैंने उसमें स्लाइड में मेंशन किया था, शोधहरा ड्रग्स मोस्टली गिवन लाइक पित्त कफ पित्तहर गुडुच्यादि पुनंदपाष्टक त्रिफला गुग्गुलू एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर जिसको है शोधहर में श्रेष्ठ है पुनंदपाष्टक। दशमूल भी वी कैन आल्सो ऐड दशमूल को आल्सो। एक्चुअली मैं ऐसा ज्यादा थोड़ा सा साउथ का स्टाइल में जाती हूँ, क्वादा प्रिपरेशन मेरा फेवरेट है। सब नॉर्थ में इतना प्रैक्टिस नहीं होता है क्वादा। हाँ वो तो है, पेशेंट टैबलेट्स भी लेता नहीं, अवेलेबल है। पेशेंट क्वाथ इजीली लेता नहीं नॉर्थ में, और साउथ में क्वाथ ले लेते हैं, अभी तो ये डिफरेंस। क्वाद का टैबलेट भी अवेलेबल है। मैं अभी रिसेंटली वो टैबलेट है तो 2 TDS देना पड़ता है। हम्म। उसमें देखा है कभी कि आपने पेशेंट को ओरल मेडिसिन देख के हाइड्रोसल्फिंग्स ठीक हुआ हो, ऐसे देखा क्या? मैम सिर्फ फॉरल मेडिसिन से नहीं किया है अभी तक है ना। योगावस्थी मैंने अभी जो दिखाया था उसमें योगावस्थी भी था, क्योंकि वो हम्म। एक वहां का जो क्या बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, वो उसका जो फ्लूइड को हम्म निकालने का थोड़ा सा रूक्षा ड्रग करके वो निकालने का भी थोड़ा सा लोकली हम्म। वो भी सोच के करती हूँ इंटरनली, बट 3 महीना तो ओरल दवाई साथ में चलाती हूँ। ये सारी शोथर मेडिसिन हाँ हाँ जी मैम। के, लेकिन सभी मेडिसिन देने के बाद भी अगर पेशेंट कंसीव नहीं होता है फिर क्या करते हैं? वही है मैम नेक्स्ट ऑप्शन। उनकी उनकी क्यों ही है क्या वो चाहते हैं उसी के तरफ से हम भी फिर अलो करते हैं। कई बार कोई हम्म पेशेंट है आईवीएफ के लिए प्लान करके वो हम्म ओल्ड एज थोड़ा सा अपर लिमिट है, वो बीज हम्म। वगैरह रखने के लिए स्पर्म वो आईवीएफ के लिए ट्राई करना चाहते तो उसी टाइम शायद कंसीव करके भी वापस आते हैं। हाँ ऐसा तो जनरली होता है। अब जैसे हाँ हम मेट्रो सिटी में, तो मेट्रो सिटी में थोड़ा प्रैक्टिस डिफरेंट रहता है। जैसे हमारी ओपीडी में मोस्ट प्रोबेबली 80-90% पेशेंट्स अगर इनफर्टिलिटी ओपीडी में बैठे हैं तो आईवे फेल्योर के आएंगे, डायरेक्ट पेशेंट्स नहीं आते हैं, ठीक है ना। यस मैम। आईवे फेल्योर के ही 3 आईवीएफ 4 आईवे फेल्योर, ये फेल्योर, फिर हमारा एग अभी फ्रीज फ्रीज कराया है हमने, जाइगोट फ्रीज कराया है टाइप, इस टाइप के पेशेंट्स आते हैं। बट यस देखिए मैम। हमारे पास मिक्स भी आते हैं। और दूसरा कि सब जगह घूमने के बाद आते हैं तो फिर एज फैक्टर भी ज्यादा ही रहता है यस पेशेंट का, मैम है ना। उसमें हमें टाइम हाँ लगता है मैम। वो ही है हाँ पेशेंट का, वो हमारे पास आते ही तुरंत उसको रिजल्ट चाहिए। वो हाँ। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो तो है, बट लेकिन हाँ दूसरा ऑब्जर्वेशन जैसे मैं बता रही थी कि सारा ट्रीटमेंट करके आते हैं तो आपको पूरा समझने में करने में टाइम लगता है, बट पेशेंट अगर जब डायरेक्टली आता है तो यू कैन गेट वेरी इजीली रिजल्ट, है ना। यस मैम रिजल्ट भी इसी मिलता है, विद इन 1 मंथ 2 मंथ में है रिजल्ट मिलता है।
ज्यादा, हाँ जल्दी आते हैं। तो अब अभी मेरी अभी लास्ट वीक पेशेंट 49 ईयर्स की पेशेंट कंसीव हुई है। ओके। उसकी हिस्ट्री नहीं है कि वो कहीं इधर उधर गई थी, मतलब वो डायरेक्ट ही हमारे पास आई थी कि हाँ कि मुझे अभी वॉन्ट्स इश्यू है, तो भी मैंने सुना था आपकी दवाई से फायदा होता है, चलो मैं आती हूँ टाइप से ऐसे आ गई। तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी है कि ये क्या मतलब है कि 49 ईयर्स में तुम्हारा मन कर गया तो तुम आ गई क्या। तो मतलब कंसीव भी बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि उसने कैसे आईवीएफ वगैरह कुछ नहीं कराया था, है ना। तो ऐसी कोई हिस्ट्री लेकर पेशेंट आते हैं इस आईवीएफ वगैरह की, तो हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है कि उसका सारा जो इफेक्ट, प्रीवियस इफेक्ट जो है उसको वॉश आउट करने में भी टाइम लगता है। तो फिर उसको हम बोलते हैं कि पहले डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। जो वो पेशेंट समझ के आता है कि मैंने पूरा आईवीएफ कराया था, इतने सारे इंजेक्शंस लगे थे, ये थे वो थे, ये उसके साइड इफेक्ट्स थे, तो मुझे डिटॉक्स तो होना ही है। तो मान जाते हैं पेशेंट की हाँ हम शोधन कराते हैं, डिटॉक्स कराते हैं, उसके बाद बाकी की मेडिसिन चलाएंगे। तो जिन दिनों डिटॉक्स हो रहा है तो वो थोड़ा सा कूल रहते हैं। बाद में फिर से इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हो जाते हैं, फिर थोड़ा से उनको पैनिक शुरू हो जाता है कि हाँ ठीक है अभी जल्दी हो जाना चाहिए टाइप्स ऐसे। लेकिन पेशेंस रखते हैं, है ना, कि जब इतना घूम के आते हैं तो वो आराम से ट्रीटमेंट कराते हैं। वो फिर जितना, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है कि फिर वो इतना ज्यादा पैनिक नहीं होते हैं कि, और लॉन्ग टर्म भी अगर बोलते हैं, मतलब काउंसलिंग करना पड़ता है आपको कि हाँ आप इतना घूम के आए हो, इतने साल लगा के आए हो, तो कुछ महीने हमें दे दो टाइप्स। ऐसे अगर हम काउंसलिंग करते हैं तो फिर पेशेंट्स मानते हैं, है ना। फिर हाँ फिर अगर कॉन्टिन्यूस आकर आपके पास आते तो रिजल्ट मिलेगा, पर 1 महीना 2 महीना आके भाग गए तो फिर नहीं मिलेगा उनको, है ना। वो फिर पहले से ही मैं समझा देती हूँ कि डोंट बी फ्रॉग, इधर से उधर जंप मत करना। अगर आप इतना घूम के आए हो तो आप थोड़ा सा तसल्ली से ट्रीटमेंट कराओ, आराम से सारा अपने आप को टाइम दो, तो फिर रिजल्ट मिल जाता है पेशेंट्स में आपको। वो तो है ना। तो अभी मैं, नमस्ते मैडम। नमस्ते कृपा, वेलकम। मुझे मैडम एक क्वेश्चन पूछना था। पहले तो मैडम को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मैडम ने इतना अच्छा आज प्रेजेंटेशन किया है ना, जैसा हम पेशेंट को सामने बिठा कर ही अब पूरी केस हिस्ट्री ले रहे हैं ऐसा लग रहा था। हाँ बहुत ही अच्छा बहुत और अच्छा एकदम प्रेजेंटेशन। प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन हाँ था। हाँ, वेरी तो नाइस प्रेजेंटेशन, यस। यस, मुझे ये पूछना था मैडम कि हम जब ये इनफर्टिलिटी के पेशेंट में बस्ती वगैरह देते हैं तो साथ साथ में फॉलिकुलर स्टडी भी करवाते हैं। तो विद प्रोसीजर हम ये ओव्यूलर स्टडी करवाते हैं। तो इस वैसे तो लिखा है कि कोई भी पंचकर्म के दरमियान व्यवहार नहीं करना है, इंटरकोर्स नहीं करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं, फॉलिकुलर अच्छा फॉलिकल बन रहा है, डोमिनेंट बन रहा है और रप्चर भी हो रहा है। तो और वो ये सारी चीजें पेशेंट को भी पता चलती है क्योंकि वो सारी जगह पे घूम के आता है। तो हम अगर मना भी करते हैं कि नहीं ट्रायल नहीं लेना है, फिर भी वो लेते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि हमें ये ट्रायल करवाना चाहिए विद पंचकर्मा, प्रोसीजर चल रही है और अच्छा ओवम बन रहा है, रप्चर भी हुआ, तो शुड वी गिव एडवाइस देम टू इंटरकोर्स, या फिर नहीं ये पंचकर्मा चल रहा है, नहीं इसमें नहीं करना है और फिर नेक्स्ट साइकिल करना है। बताओ अर्चना, तुम क्या फॉलो करते हो? मैम, मैडम तो मैक्सिमम उस टाइम फर्स्ट 12th डे के पहले मैक्सिमम प्रोटोकॉल खत्म करेंगे ऐसा ही प्लान करती हूँ। हाँ। के साइकिल के अकॉर्डिंग है ना। तो हम्म प्रोसीजर के बीच में मात्रावस्थी है तो ही अलाउ करती हूँ, फिर और प्रोसीजर भी स्टॉप करती हूँ। ऐसा हम्म ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं तो नहीं, तो मैं मैक्सिमम अवॉइड ही करती हूँ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मना करना ही है। अभी जो हम्म उत्तरावस्थी वगैरह करते हैं तो पेशेंट पूछते हैं, तो हम्म मोस्टली अवॉइड ही करने के लिए बोलती हूँ। हम भी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट की साइकिल साइकिल अगर 6 या 7 ऐसा दिन की है तो 8 या 9वें दिन से बस्ती स्टार्ट होती है और 10वें दिन से हम फॉलिकुलर स्टडी भी करवाते हैं। तो साथ साथ में चलता है, तो हम मना भी करते हैं फिर भी पेशेंट ट्रायल लेता है और फिर बोलते हैं कि इस बार तो अच्छा ओवम बना था, क्यों प्रेगनेंसी नहीं रही। और कभी कभी मैडम हमने ऐसा भी देखा है कि विथ पंचकर्मा उन्होंने ट्रायल लिया और प्रेगनेंसी रह भी गई। तो आइडियली ऐसा मतलब क्या एक्चुअली होना चाहिए। हम्म गुड क्वेश्चन। इसमें जो अभी अर्चना ने बताया कि मैं पहले ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेती हूँ, अभी मैं अपना जो मैं करती हूँ वो बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले जो पेशेंट आती है हमारे पास फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं,
तब कोई ऐसा थेरेपी नहीं चलती है, मतलब कोई भी मात्रा बस्ती उत्तर बस्ती। पहले हम असेसमेंट लेते हैं कि हाँ ठीक है, इस साइकिल में ओरल देके फॉलिकुलर स्टडी पहले कराते हैं कि दिक्कत कहाँ पर है उसके, है ना। जनरली मेरा अपना स्टाइल जो है वो रहता है कि हाँ मैंने देख लिया कि हाँ पेशेंट का भी फॉलिकल छोटा रह रहा है, या छोटा नहीं तो बड़ा रह गया है, उसका सिस में कन्वर्ट हो गया, वटेवर जो भी उसमें रिपोर्ट में मुझे पता चल गया, या तो नॉर्मल ओव्यूलेशन है, ठीक है। तो जो मैंने ट्रीटमेंट प्लान बनाया, तो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे फर्स्ट तो सेफ साइड यही रहता है कि हाँ इसी हिसाब से चलो कि अगर पेशेंट के नॉर्मल ओव्यूलेशन है तो तब तक की ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है प्लान करो उसका, ठीक है। और अदरवाइज तो अगर थेरापी जैसे उत्तर बस्ती पे तो साफ मना करते हैं कि उत्तर बस्ती के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं करना है। हाँ, तब तो बिल्कुल वैसे ही मना है कि उत्तर बस्ती है तो तब मना कर देते हैं। जनरली यही होता है कि उत्तर बस्ती पहले कंप्लीट हो जाती है, ओव्यूलेशन से पहले हो ही जाती है ना। यस और हाँ बाकी अगर योग बस्ती भी जनरली हो जाती है, किसी का डिलेड साइकिल है और आपकी योग बस्ती चल रही है, तो जैसे अर्चना ने कहा कि अनुवासन चल रही है तो हम मना उसको नहीं कर सकते। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है इसको इतने ही दिन करना है, अब उसका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया, अब हम इसको थेरापी रोक देंगे, नाउ यू आर फ्री टू गो, उसको फ्री छोड़ देते हैं, ये करते हैं। मतलब ट्रायल के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि 18 हाँ पॉइंट समथिंग का अगर ओवम फॉलिकल बन हाँ, जाता है तो मैं बस्ती बस स्टॉप कर देती हूँ। स्टॉप कर सिर्फ देना है, हाँ हाँ, सिर्फ लोकल स्वेदन के लिए बोलती हूँ, जैसे वो रप्चर हाँ हो जाए। हाँ, हाँ और फिर ट्रायल के लिए भी बोलते हैं कि नहीं, इस बार बना है अच्छा तो रप्चर हो जाएगा, आप ट्रायल लीजिए। हाँ, यही हाँ, बोलते हैं। उत्तर बस्ती में नहीं बोलते, लेकिन फिर भी पेशेंट इतना वो ये होता है कि नहीं ओवम बना है तो हम तो ट्रायल लेंगे, हम मना करते हैं फिर भी लेते हैं। और वो पता तब चलता है जब पीरियड मिस हो जाता है, तब वो बोलते हैं कि मैंने तो ट्रायल लिया था और ऐसा हुआ। हाँ जनरली जनरली लेकिन उत्तर बस्ती तब तक कंप्लीट हो जाती है जनरली, ओव्यूलेशन तक, है ना। हम्म। बाकी बाकी या तो बंद नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं कि हाँ इसका फॉलिकल बन रहा है, तभी नाउ वी विल स्टॉप द प्रोसीजर, उसको स्टॉप कर देते हैं, होल्ड पे डाल देते हैं, ऐसा करते हैं। क्योंकि ओके। पेशेंट को एक तो फॉलिकुलर स्टडी का भी स्ट्रेस है, सेकेंडली उसको हम ये थेरापी कर रहे हैं उसका भी स्ट्रेस है, और तीसरा फिर रिलेशन बनाना उसका भी स्ट्रेस है। तो इतने ज्यादा स्ट्रेस हम पेशेंट को नहीं देते, बोलते हैं ना कि सामान्य से गर्भधारणा ना, कंसीव होने यस। के लिए पूरा मन शांत होना भी जरूरी है। तो फिर मैं वो छोड़ देती हूँ कि छोड़ो हम कोई टेस्ट नहीं कराएंगे इस बार, बिल्कुल कूल होके आप रहो और रिलेशन रखो, यस। ऐसा करते हैं कि हाँ उसको, मतलब इन्वेस्टिगेशन का भी पेशेंट को स्ट्रेस होता ही है कि हाँ अभी मैं कराने जाऊंगी, टीवीएस कराऊंगी, फॉलिकल बना होगा नहीं बना होगा, क्या रिपोर्ट आएगी, टाइप्स, ये भी एक टाइप का स्ट्रेस उसके माइंड में हम क्रिएट करते हैं। तो मेरा ये रहता है कि मैं जब उसको बोलना है कि आपने ट्राई करना है, तो फिर वो प्रीवियस रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ा सा आइडिया लगा के छोड़ देती हूँ, क्या ठीक है इस बार ही नहीं कराते, आप आराम से जाके रिलेशन बनाओ, ऐसे ये स्ट्रेस नहीं देना है, ऐसे यस। 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 रोक देते हैं, हाँ रोक देते हैं, ऐसे करते ओके। हैं। थैंक यू सो मच मैम। कोई और अपना कुछ पूछना चाहता है, ऐड ऑन करना चाहते हैं तो हमारे पास अभी 1-2 मिनट है, हम कर सकते हैं इसमें, किसी का क्वेश्चन भी ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। अर्चना स्टॉप्स शेयरिंग्स, या गुड। सो पवन सर ओवर टू यू, सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2 मिनट है, वी कैन कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी वेबिनार रही आज। मैं आशा करता हूँ ये सभी के काम, क्योंकि प्रैक्टिकल था, पूरा का पूरा मेहनत थी अर्चना जी की। ग्रेट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसा उन्होंने समझाया केस स्टडीज में, मैं ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद का आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है, और इन बातों से यही तो कन्विंसिंग पावर है समाज के लिए। एक्सीलेंट सेशन मैडम। कामिनी जी, आपके जितने आप हीरे लाते हैं, गजब है, आप रियली जौहरी हैं। ये वेबिनार बहुत शानदार रही, प्रैक्टिकल रही। आप लोगों से एक बात चलते चलते पूछना चाहता हूँ, आप लोगों में से किसी ने थिएटर में भाग लिया है? अभी हमारी नेक्स्ट वेबिनार
रोल ऑफ थिएटर इन हेल्थ अवेयरनेस है। आज वर्ल्ड थिएटर डे है जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यदि किसी ने लिया हो तो मैं मुझे स्पीकर के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ। कम्युनिटी आपके यहाँ मतलब अपने एनुअल फंक्शन के अलावा कम्युनिटी मेडिसिन में कोई थिएटर वगैरह का प्लान है? जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह बहुत करते हैं यूज, गवर्नमेंट करती है, रेड क्रॉस सोसाइटी करती है, नुक्कड़ नाटक करती है। तो इसमें हम्म। भी एक नया कंसेप्ट है पूरा अच्छा कम्युनिटी। जी, नहीं नहीं, हमने तो नहीं किया है इसमें, किसी ने भी। मुझे लगता है जितने भी लोग जुड़े उसमें तो मुझे नहीं लगता कि इसका एक्सपीरियंस होगा, जहां तक मैं जानती हूँ। बाकी अपना कोई बता सकता है तो दे आर फ्री टू शेयर। हमारी अगली वेबिनार इसी टॉपिक पे है, इसीलिए मैंने ये आप लोगों के सामने रखा। बड़ा कॉमन टॉपिक है, इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं। एक्स्ट्रा हाँ करिकुलर एक्टिविटी हाँ जिसने की होगी वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आदरणीय अर्चना जी का भी बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हमारे लिए जो भी व्यासपीठ पर बैठा है वो हमारे लिए महर्षि व्यास के तुल्य है। उसमें उम्र बाल व्यास भी होते हैं। तो अर्चना जी ने जैसा आज प्रेजेंटेशन किया उसमें तो मुझे उनकी प्रतिभा झलक रही थी, बहुत बड़ी प्रतिभा झलक रही थी। और एक और चीज सामने आई कि श्री धन्वंतरी HDHCH में इतने केसेस आते हैं और इतने केसेस होते हैं। मैं जाके आया हूँ वहाँ। तो रियली थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं थैंक यू अब अर्चना। नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, थैंक यू sir. थैंक यू। सर नमस्ते सर। मैं डॉक्टर सुलोचना। थिएटर में वर्क मतलब आई कुड नॉट गेट यू सर। थिएटर में I would like to invite you humbly to communicate that how is effective in health awareness. फॉर पब्लिक सर। Pardon? हाँ, थिएटर में काम करने का जो आप बोल रहे थे, थिएटर इन द सेंस कम्युनिटी हेल्थ के लिए जो टॉक्स होते हैं वैसा बोल रहे थे आप? जी हाँ। हाँ सर। Sir, I'm- regularly I used to give the topics, my lecture in live sessions in Doordarshan Yadagiri Telugu channel, sir. That is national channel in Telugu language, our regional language, in No Telangana problem, state. no problem. Please wait for 2 minutes only. I'm changing the link for next webinar, and then please guide us in Telugu, in Tamil, whatever language may be. Language is the media of communication. So please give me only 2 minutes. But theater is also important factor in our life. I am from Bengal, Calcutta, though I am in Bhopal. Theater culture is very popular in West Bengal in this modern era also. हाँ So हाँ सर। thank you very much. मैं कर रहा हूँ अभी, लिंक चेंज कर रहा हूँ, केवल आधा मिनट दीजिए। नमस्कार. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society, AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series on World Theatre Day. The milestone is 2252. Theatre is a part of our life. Somebody says that we are here to play our role in the world. So world is also theatre. And today World Theatre Day is there. So we are celebrating that, but with relation to our Ayush or health promotion or health awareness, we will be discussing on these points how theatre is effective in health awareness.
Now I would like to first invite Dr. Solochana ji, Solochana Arige. Welcome, madam. Welcome. What is your opinion about theater? That how theater can be used in health awareness? Because I am aware, Government of India has a plan or a scheme for rural area to communicate its message through theater. Maybe theater, maybe nukkad natak, but role playing is there. So everybody can understand what government want to say. Like this, Red Cross Society is also arranging drama theater to communicate health awareness concept. So it is my question, not question, but humble request to Dr. Solochana ji, in Telugu, in Kannada, whatever it may be, but how theater is important or can be used for health promotion. Dr. Solochana Argeji, welcome. Thank you, sir. Namaste, sir. Thank you for inviting me, sir. Thank you, Dr. Kamini, madam, and Sarvebhyo Namaha. The role of the theatre to reach the public regarding the system of Ayurveda, it is very important. In the modern era, in the sector of corporate medical system, it is very essential to reach the public so that their treatment should be on a economical, financially at the in the reach of the economical status, and the safe methods, and very essential point is for the prevention of the diseases, and to explain regarding the patya ki in the Ayurveda it is very well stated ki nidana parivarjanameva chikissa, and without patya the treatment is not completed. So to understand the things like role of patya and prevention of the disease, and to avail the safe treatment modalities, and with herbs and rasaushadis which are available surrounding us, even in the villages, around the houses or in the fields, so that for minimum common problems they can avail with the amayika prayoga of the drugs which are available in their areas. So in these aspects, so we can reach the people through the media, through, as you said, sir, through the theater. So it is very essential. What the usually the people will have the idea, the Ayurveda is only for vata rogas or charma rogas. This is the faith of the people usually. So we can reach that even Ayurveda has got treatment and preventive measures for every sort of the diseases, and especially in the gynec disorders. Usually a common man knows that the Ayurveda is meant for only pakshaghata or charma rogas, like that. But to clear off these certain myths in the people, and to create a lot of awareness, and so that we can motivate the people to follow the dainandina swasthavrita and ahara vihara niyamas, so as to prevent the diseases, especially the lifestyle diseases, and also to minimize the severity of the diseases, and to avail the treatment, like as madam said, in all the gynecological disorders, including the infertility and PCOD and all, especially the menstrual problems, they can avail the treatment modalities and the treatment methods which are available in the Ayurvedic system, that is Panchakarma therapy as Shamana and Shodhana. These are indicated and practiced in the field of the gynec disorders. This awareness is very less among the people in the society. So through media, we can approach the people, and we can do the benefit to the people so that they can avail the Ayurvedic system,
and they can practice, they can avail the treatment, and they can follow the healthy lifestyle through the our Swasthya and Patya, so that we can avoid many diseases and even the psychological disorders nowadays, which is like seen abundantly even in the educated persons, in the students, like psychologically, emotionally, they are getting with little things easily disturbed, and they are attempting so and so. So to prevent the such conditions, and with our Satvavajaya and like Swasthavritta Niyamas, Satvavajaya Chikitsa, we can boost up the strengthening of the psychology of the students and our younger generation, and we can motivate them to adopt the healthy lifestyle, sir. So that as a part of my duty, I am also like regularly like attending the programs in the Doordarshan Prasara Bharati Adagiri Telugu channel once in 3 months, sir. Very recently, I had the talk on infertility, and it was a live session. And there, patients used to ask the questions, and I used to answer also, sir. Thank you very much, sir, for giving the opportunity. Thank you. Sarvebhyo Namaha. Thank you. Thank you very much, Dr. Sulochana ji. In preamble, I would like to communicate my concept. Brand, drama, art, and education. This is very unseen process, not of today only, where in Rishikul and Gurukul, the role playing was there to communicate the message in very easy and understandable manner. What is drama? Drama is simply referred to a form of fiction which is representative in a performance in theater, radio, or TV. As you told that you are going to Telugu TV in every 3 months, I would like to humbly request, please do join every day. If you communicate me your mobile number, I will send you regularly. So what is the role of drama and art in education? Theater, music, dance, and visual art. These are generally four forms of communication, and all four are effective. If we see theater, between theater and dance, creativity is there. So creativity, communication, civilization, and choice. 4C. Communication, learning is the objective, so we can communicate in very easy and understandable manner. Creativity, to perform a drama, role playing, whatever it may be, the performer has to be creative, because in role playing, there are so many points that he or she can communicate her sentiment or his sentiment without any script. So it will be scripted also, it will be without a script also. Then choice among products of the art, to make critical assessment of what one reads, uses, and hears. Means we can take feedback from the audience or viewers for this creativity. Civilization. This civilization is very important because civilization includes this drama. So hidden interests are there. Now, there are key regions about the importance of drama and arts in education. Number one, teaches self-expression. Children or adult, whoever it may be, learn about the importance of self-expression through use of drama and arts in education, and through creative expression. Their perception and worldview are broader, vocabulary develops, which equips them with the skills to face adversities late in life. Adversities late in life. So they can face any adversity even in old age if they are
comfortable with role play. Life skill training. Theater also gives life skill training. It imparts a student with various life skills like teamwork, compassion, cooperation, and collaboration. Teamwork, important. Without that, drama cannot be performed. Compassion, definitely. Cooperation and collaboration. These four unique strategies are being developed by this theater. To learn constructive criticism, because nobody wants to listen their criticism, so they will also learn about taking constructive criticism and feedback in a way that they can develop themselves. Contributes to personality development. It is very important. I have also passed approximately 25% at 25 years of my life in drama, in theater, in West Bengal. So I know the perfect feedback of live audience is very important, and that only can be obtained or can be observed in theater. Theater has also one point. There is no cut at all. You have to be careful for dialogue delivery, for prompting, but all the attributes makes you perfect communicator, perfect orator, perfect presenter in your life. Find their voice. Theater, performing arts are performing arts. Students are able to find their unique voice that helps them explore their inner talent, skill, and competency. Means he or she also feels that I am something. Problem solving skills. In problem solving skills, students learn about the value of problem solving. Why student only I can say this is for rural or urban audience also. So they develop problem solving skills. Learn to lead. This is very important. In drama, in theater, whoever is working on the stage, whoever is playing the role on a stage, everybody has to be alert. Number one, cooperative. Number two, as we have seen in point two, collaborative and passionate. So these are the importance of now benefits of drama and art in education. Theater facilitate a better learning environment, boost imagination, increases participation, imparts soft skills, engages learners in problem solving, diverse discourse, co-working and co-learning. These all are plus points of theater and drama. Promotes potential catalyst to bring impactful changes in society, motivates learner to become critical thinkers, and meaningful learning through symbols. Mime is also there where performer communicate his or her sentiments and message without saying anything. Mooka Vinay means mime. No word will be spoken by the performer, but audience or viewer will understand what he want to say. That is also an art. So, in a world where their need of leaders, influencers, and thinkers is imminent and growing, the education sector has added responsibility to it. By implementing effective teaching, the quality of education is certainly to increase. So, for benefit of drama, I have told you that these are the in small. Students become better learner, audience become better learners. They learn to empathize the other social element. With the spirit of co-working, they develop an attitude of co-learning. Using their leadership skill, they help at resolving conflicts of micro level and at a large level, as well as in society. So these are all
benefit, I'm don't want to repeat it again and again, but the arts are motivating in schools, that is separate issue. What we are conducting on behalf of Government of India, our Red Cross Society, our Health Ministry, our Ayush Ministry, all are conducting theatre for health promotion, and which is meaningful, positive, meaningful, give result also. Then creativity, motor skills, improves academic performance, confidence. So if we can, perseverance, focus, accountability, collaboration, decision making, these are generally points to understand that we can have these attributes if we are involving ourselves in drama or theatre. So theatre in health education, theatre in health awareness can be definitely positive and definitely beneficial for all, not only for students, for rural public, for urban public. If we want to communicate our message, it is better to communicate in dramatic way with the role-playing performance. So thank you very much. Now I would like to request Dr. Sakat Kumar Vasu for his comments, his speech. Dr. Sagat Kumar Vasu, please. Thank you, Sharmaji. I think Well, it was a very good presentation, very enriching for me too. Very nice points. I will just summarize by suggesting this, that definitely theaters have a very strong impact on the education of common folk, but it has lost its steam over the time because of competition from various other sources. Today, the mobile technology is so powerful and it has taken over our life in such a strong way that it is not so easy today to reestablish the role of theater that there was maybe 40, 30 years back. But nonetheless, if we could revitalize theater practices, it could definitely and very certainly add up to the education, in particularly in case of Ayush, not only for the students and the researchers, but also for the patients who are looking for taking up Ayush treatment sources. For many people who are not used to Ayurveda treatment to this day, there are many concerns, fears, prejudices that they have right now. Afraid of treatment, afraid that it is a long-term treatment, afraid that it may have a significant side effects and stuff, afraid about dosages and application, that I may be taking overdose of particular medication, directly taking it from the plant sources. They are not aware of that how modified Ayurveda has become. The pharmacy associated with Ayurveda and the food and drugs industry associated, particularly the pharmaceutical drug industry associated with Ayurveda, has undergone drastic modifications. Now we have capsules, we have pills, we have tonics, we have syrups, everything available like in modern medicine is also available in case of Ayurveda. So the intake of the medication is much, much easier, much, much comfortable than people used to think about it. But to bring it to the people, to make people understand that how important and how easy it is, how comfortable and simple it is, I think it is very important if theatrical preparations could be included. As a result, it will strengthen Ayurvedic practices. Many times we think about, we have uncanny fear about many phenomena. It is important that for the common masses to make them understand and to clear their doubts, particularly with the help of theatrical presentations, Ayurveda could definitely, Ayush education will make definitely and significant progress, as you have very nicely illustrated. But at the same time, on this day of 2025, with these advanced technologies available on net, mobile, internet, laptops, it is not easy to bring people to the platform of theater in that easy manner that used to be done maybe 40 years back. It is challenging to these days, so that it becomes difficult
for people to get attracted, for people to give the presenters the time that they need to make an impact. This is a cultural difference. This is a technological challenge right now. Our life has diverged. Technology has taken over our life. How much we would be able to bring back theater into the education format. In education format, as a part of the course and curriculum, I think it is definitely possible. But in a broader scale, we are looking for making Ayush more acceptable to the people and to